Well, breaking news coming in now from Sri Lanka. A little while earlier, we had told you that voting was underway in the Sri Lankan parliament. Now news coming in. Counting is complete. Ranil Wickremesinghe elected as the new Sri Lankan president. So Ranil Wickremesinghe always the front runner, despite the fact that he really personally did not have the numbers. But he's always been a Gotabaya, a Rajapaksa loyalist. And well, we see the result of that. Ranil Wickremesinghe is the new president of Sri Lanka. And joining us now is our correspondent, Saloni. Saloni, when we talk about this result, it is a big surprise, but really not unexpected as such because of the numbers and because, well, Ranil, even as the protesters had said, a loyalist of the Rajapaksa family. बिल्कुल देखिए, जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही है। रणिल विक्रमसिंघे 104 शासन कर चुके हैं। जाला जो कि दूसरे बड़े चेहरे टक्कर की बात कही जा रही थी, वो 82 वोट अब तक कर चुके हैं। और लगातार जो बड़ी जानकारी मिल रही थी कि प्रोटेस्टर्स जुटने वाले हैं, तो प्रेसिडेंशियल जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ बताया जा रहा है कि 100 से 150 लोग तो वहाँ की भी हम तस्वीरें दिखाएंगे, वहां पे भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि रणिल विक्रमसिंघे, जिसका जनता लगातार विरोध कर रही थी, जिसका विरोध लगातार कहा जा रहा था कि रणिल विक्रमसिंघे अगर सत्ता पर आते हैं तो एक बार फिर प्रदर्शनों का दौर तेज हो सकता है, तो वो अब श्रीलंका में होने वाला है। क्योंकि 44 साल बाद ऐसा हुआ है कि सीक्रेट बैलेट वोटिंग हुई है और संसद ने चुना है। लगातार ही राइट, you're telling us you would be showing us visuals there, Saloni. A huge setback as far as the protesters are concerned, but breaking news coming in now. Ranil Wickremesinghe is the new president of Sri Lanka. So visuals coming in. Saloni, our correspondent on the ground. Protesters had warned earlier that this could happen and they had expressed their opposition to this outcome. However, counting now is complete. The results are out of the presidential elections in Sri Lanka that happened today, and Ranil Wickremesinghe is the new president of the island nation. So 134 votes in favor. Audible to you? That's the report we are getting. Sri Lanka getting a new president, and we'll have to wait and watch. देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है। 134 वोट मिले हैं, 134 वोट मिले हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट पर लोगों का जुड़ना भी शुरू हो गया। आपसे कुछ देर में हम वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वहां हमें जाना होगा। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि सिंघे तमाम विरोध के बाद प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उनकी महत्वाकांक्षा जो थी उसे उन्होंने हासिल कर लिया है और उनको समर्थन मिला 134 वोटों का। डलस से जिससे उनका मुकाबला था, वो 80 से 85 वोटों के बीच थमकर रह गए हैं। और एक बार फिर अब ये समझ में आ रहा है कि जनता सड़कों पर उतर सकती है, क्योंकि जनता ने पहले ही तय किया था कि सिर्फ गोटाबाया राजपक्षे के जाने से नहीं चलेगा, रणिल विक्रमसिंघे को भी पद पर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में क्या श्रीलंका में एक बार फिर प्रदर्शनों का दौर तेज होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रणिल विक्रमसिंघे ने एहतियाती कदम उठाते हुए पहले ही आर्मी की तैनाती कर दी है। आपातकाल आपको याद होगा कि कल ही लागू कर दिया गया था। तो ऐसे में आपातकाल में आर्मी के पास बहुत सारे पावर्स आ जाते हैं और हर गली चौक चौराहों पर हमने देखा कि आर्मी के जवान तैनात हैं। यानी कोई अप्रिय स्थिति नजर आती है तो उसको लेकर पहले ही गवर्नमेंट तैयारी रख रही है अपनी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अब 100-150 प्रोटेस्टर्स वहां प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट पर पहुंचे हैं, वहां जाकर हमें आपको तस्वीरें दिखानी होगी। लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल गया है रणिल विक्रमसिंघे के रूप में। लेकिन रणिल विक्रमसिंघे जो 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ गोटाबाया राजपक्षे का निभाने वाले हैं। 2024 में चुनाव होगा, उससे पहले भारी विरोध, जनता का समर्थन ना मिलना, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये तमाम चीजें जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। जी
Right, Saloni, and we can see that, well, as you were telling us, since it's an emergency situation, and already Ranil Wickremesinghe is springing into action even before those results were out, deploying troops in huge numbers. Well, it's a huge setback as far as protesters are concerned, but totally, clearly, Wickremesinghe was expecting this outcome earlier too, despite he himself not having the numbers. The fact that he's a Gotabaya loyalist ensured that he would be getting the votes, because earlier it was their government that was in power. बिल्कुल ये बात आप सही कह रही हैं रुकमा। देखिए क्या स्थिति थी रुकमा कि यहाँ पर विक्रमसिंघे को लेकर ये कहा जा रहा था कि विक्रमसिंघे महत्वाकांक्षा रखते हैं, वो उस कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं, उनको समर्थन भी मिल गया। एसएलपीपी का समर्थन उन्हें मिलना लिखा हुआ था, क्योंकि राजपक्षे क्लैन कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट कर रहा था। और अब जो स्थिति बनने वाली है उसमें श्रीलंका में हो सकता है कि विरोध बड़े स्तर पर देखा जाए, क्योंकि प्रोटेस्टर्स पहले ही कह रहे थे। और जिस तरह से आपने जिक्र किया, अनुरा देशनायके को सिर्फ 3 वोट मिले हैं, जो उनके खुद के पार्टी के चेहरे हैं संसद में। इसके अलावा डलस को जो उम्मीद थी उससे कम वोट मिले, और यही वजह है कि विक्रमसिंघे लीड कर गए। सजित प्रेमदासा का भी पीछे आना कहीं ना कहीं एक बड़ा बेनिफिशियल पार्ट रहा है रानिल विक्रमसिंघे के लिए, और अब वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। निर्णय कह रहे हैं कि साफ तौर पर ये बड़ी बात है कि उनकी तरफ से अब राजनीतिक स्थिरता तो आ गई है, अब आर्थिक स्थिरता तो आ गई। ये होगा, ये देखने वाली बात होगी रुकमा। Meanwhile, he had instituted certain steps. So tell us about the overall situation right now. Has there been any improvement as far as transportation is concerned, as far as fuel availability is concerned, Saloni? कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि फ्यूल पासेस की बात कही गई है। फ्यूल पासेस का ऐलान किया गया है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो ये कहा गया है कि एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे बचने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए हम कदम उठाएंगे। ये सीरीज ऑफ ट्वीट्स आए थे नॉमिनेशन से पहले, उसमें विक्रमसिंघे ये बात कह रहे थे, और ये भी कहा उन्होंने कि जो ईस्टर अटैक्स हुए थे उस पर भी यूएस के साथ एक जांच कराई जाएगी। तो ऐसे इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कितना कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। And when we talk about the next steps, the next challenges that Ranil Wickremesinghe has to undertake now, that would be negotiations with the IMF, isn't it, Saloni, for a bailout? नहीं रुकमा, हमें अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट पे जो प्रदर्शन है वो आपको तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। हम जुड़ते हैं आपके साथ थोड़ी देर में, उसके दौर जानकारी देंगे। हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि हमारे लिए यहाँ कम्यूट करना मुश्किल है और वहाँ पहुँचना इस वक्त बहुत जरूरी है। तो वहाँ पहुँचकर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। थोड़ा सा वक्त हमें दीजिए जी। Well, Saloni, our correspondent there, Wickremesinghe, Ranil Wickremesinghe, that is, so far the acting president, now elected as the new president of Sri Lanka, and he is to serve till 2024. Protesters had expressed their apprehensions earlier that this could happen, and they were expressing their opposition to this as well. And out of 219 votes that were cast, Ranil Wickremesinghe won 134. He will now be serving, as per these results, till 2024. He gets 134 votes. Ranil Wickremesinghe is the new president of Sri Lanka. He has huge challenges before him. Protesters, meanwhile, as our correspondent was telling us, Saloni on the Republic on the ground there in Colombo, protesters are gathering once again. Earlier too, we had been showing you continuously in our reports from the ground about how they had expressed their apprehensions that this is what could happen. Wickremesinghe, meanwhile, has already served all 4 terms as a prime minister. Earlier, however, the protesters were very clear that they do not want him. Meanwhile, Saloni also told us beforehand how there has been a massive deployment of troops of the Sri Lankan armed forces because, as far as we know, the state of emergency is still in place. Earlier, Sajit Premadasa, who was the front runner in the early days of these protests when Gotabaya fled the country, withdrew from the fray. There were just 3 names, and among them it was Ranil Wickremesinghe, who won with 134 votes.